Hello everyone. This question appears in class 7th NCERT chapter of simple equation. This is fifth question of its exercise 4.1. So the question says that write the following equations in statement forms. So हमें equations को statement form में represent करना है, लिखना है. So first है हमारे पास p plus 4 is equal to 15. So हो जाएगा the sum of numbers p and 4 is 15. So हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं 4 is added to p, then we got 15. So इस तरह से हम स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं. सेकंड हो जाएगा 7 is 7 subtracted from m is 3. थर्ड हो जाएगा हमारे पास 2m is equal to 7. So twice of m is 7. Then fourth हो जाएगा m by 5 is equal to 3. So 1/5 of m is 3. Then fifth 3m by 5 is equal to 6. So हो जाएगा 3/5 of m is 6. यहाँ हम इसे ये भी लिख सकते हैं thrice of m is divided by 5 is equal to 6. Then sixth हो जाएगा, सिक्स्थ स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास 3p plus 4 is equal to 25. So सिक्स्थ स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास 3 times of p plus 4 gives you 25. Then seventh statement हो जाएगा 4p minus 2 is equal to 18. So 4 times of p minus 2 gives you 18. Then एर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास एर्थ इक्वेशन है p by 2 plus 2 is equal to 8. So half of p plus 2 gives you 8. So ये हमारे स्टेटमेंट्स जाएंगे for 1 to 8 equations. Thank you.